आज हम बनाएंगे चाइनीज़ स्विस रोल। चाइनीज़ स्विस रोल के लिए जो वेजेस हमें चाहिए हैं उसमें हम इस्तेमाल करेंगे 1 carrot, 2 boiled potatoes, 1 capsicum and 1 red onion. So let's start the walk. यहाँ हम ले रहे हैं चीज़ें क्रीपर्स बनाने के लिए। So ये 1 cup मैदा है, all purpose flour, 1 cup of milk, 2 eggs, half a teaspoon of salt and a tablespoon of melted butter. अब हम अपनी सारी चीज़ें ब्लेंडर में ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ये है 1 cup of milk. सेकेंडली हम इसमें ऐड करेंगे 2 eggs, then half a teaspoon of salt, 1 tablespoon of melted butter. यहाँ हम ऐड करेंगे 1 cup of all-purpose flour. Now blend it. So चाइनीज़ रोल्स बनाने के लिए, स्विस रोल्स बनाने के लिए हमने अपने जो पोटैटोज़ हैं उनको ग्रेट किया है. Secondly we have 1 cup of sliced onions. We have 1 cup of sliced capsicum. Here we have 1 cup of carrots, grated carrots, and now this is half a cup of mozzarella cheese. Here we have 1 teaspoon of black pepper, half a teaspoon of salt, or you can add as you like. Here we add drops of oil. Just grease our pan. Now let's saute our vegetables. First of all, we add carrots. Secondly, we add cup of onions. At this stage, we will add ketchup. And next, we will add a teaspoon of black pepper, half a teaspoon of salt. We will saute the vegetables. Now we will add a tablespoon of soy sauce. Now you can see the veggies are done. Now you can see the final look of the veggies. Have a look. अभी हमारी veggies ready हैं. अब हम इनको सॉटे करेंगे. Now let's add these veggies into a bowl. This is 1 cup of potatoes. Add cheese in that. Add your veggies. Now mix it. Now we will add spring onions in that. Sprinkle 1 drop of oil and grease your pan. Now we will add batter like this. ऐसे हम इसको पूरा अच्छे से फैला लें. क्रीपर्स बनाने के लिए आपका जो पैन है वो बहुत हाई हीट पे नहीं होना चाहिए. जब आप उसमें अपना बैटर ऐड कर दें तो उसके बाद उसको हम तेज आंच करेंगे. You can see how it looks. Now you can see the other side of this paper. I'll show you. Look at this. They are ready. Now we will stuff our stuffing in a hot creeper. You can see. Here are the rolls. अब हम अपने क्रीपर्स को पहले अंडे में कोट करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक डिप में करेंगे, then coat it into crumbs. So they are ready to go. अब सबसे पहले हम इसको अंडे में कोट करेंगे, then क्रम्स में. So this is the final look. So let's try these peppers. हम इनको मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे. So this is the final look of